मिरर से रिकॉर्ड की वीडियो का और एलगाटो से रिकॉर्ड की वीडियो का। तो गाइस जो भी कंपैरिजन अभी हम करने वाले हैं, ये दोनों जो क्लिप्स है जो मैंने यूज़ की है, ये दोनों क्लिप्स मेरे ही लाइव स्ट्रीम से मैंने ली हुई है। एक क्लिप है जो मैं जब ए पावर मिरर यूज़ करके लाइव स्ट्रीम करता था तब मेरा गेम प्ले कैसा रिकॉर्ड होता था उसकी क्लिप, और एक जो है वो है अभी जब मैंने एलगाटो ले लिया है तो एलगाटो से रिकॉर्ड करता हूँ तो कैसी रिकॉर्डिंग होती है। तो ये दोनों क्लिप का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इंडिविजुअल दिखाऊंगा, एक बार ए पावर मिरर की वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको एलगाटो की वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग वो दोनों क्लिप्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। और आप लोग नोटिस करो वहाँ पे कि फ्रेम्स कैसी दिख रही है, वीडियो क्वालिटी कैसी दिख रही है, क्या कैसे दिख रहा है, आप लोग खुद कंपेयर कर लोगे। मुझे वहाँ पे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग खुद ही देख लो। और उनके पास गन नहीं है। और उनके पास गन नहीं है। मैं आ गया ट्रैंगल, पूरी स्क्वाड है। एक नॉक इधर। Watch out! अबे मैं ही बचा, उसने फिनिश भी कर दिया। भाई पूरी स्क्वाड ऊपर है भाई, क्या ही मतलब बने तो बने कैसे। अरे भाई उधर गए लोग। दो पास क्वालिटी जैसे भी आइटम हेवन है और शॉटगन सामी है। नेरी ना सके एडी क्वालिटी है आपको कौन मे सा बी चाहिए, स्टार सीपीयू रेटेड वाला? में एनकोडिंग जो पावर है नहीं है तो 720 भी नहीं। हाँ हैं अरे चाहिए तो मुझे फोन में तो खराब देखना चाहिए तीसरा नहीं पिछ लाइक बिन फोन में का है आग हाँ तो के पीछे में मेरा जवान इकडे में टाइम लाटा एलगाटो और ए पावर मिरर की वीडियो क्वालिटी का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और यार आइडिया दिया करो यार, नीचे कमेंट करके बता दिया करो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बस में। दोस्तों लास्ट मैंने लगभग 6-7 महीने पहले एक वीडियो पोस्ट किया था ए पावर मिनट के ऊपर, जिसमें आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले को पीसी पे फेंक सकते हो या फिर पीसी पे देख सकते हो वाईफाई के थ्रू। मैंने बताया था यूएसबी के थ्रू नहीं बताया था। तो आज मैं यूएसबी के पूरा सॉल्यूशन लेके आऊँ, प्लस ऑडियो का भी कुछ फिक्स लेके आऊँ कि आप अपने मोबाइल का अगर गेम प्ले करते हो या फिर कोई वीडियोज़ वगैरह देखते हो, आपको बड़ा देखना है या कुछ क्लासेस करते हो जो मोबाइल डिस्प्ले बहुत छोटी सी होती है कि मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसको बड़ा करके पीसी में किस प्रकार देख हाँ सकते हो। तो आज मैं उसके ऊपर बिल्कुल फिक्स सॉल्यूशन लेके एकदम लेटेस्ट वर्जन का अपडेट का डायरेक्ट लिंक लेके आऊँ। इस वीडियो को और लेट करते हुए स्टार्ट तो कहीं कि यहाँ क्रोम थी मथे ही है लास्ट जो अपना पड़ता हुआ होता है आपका वर्जन 1.4.5 का, कि आप वाईफाई के थ्रू हॉटस्पॉट के थ्रू काम करें तो आपको दिक्कत आ रही थी। तो इस इंस्टॉलेशन से चेक कर दो, यहाँ पे ये दो एप्लीकेशन है आप लगा हुआ है, इसके ऊपर कॉपी लगा हुआ हाँ तो ये मैं फ़ोन है। तो यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाते हैं हम, और आपका जो भी फ़ोन है आप वहाँ पे हाँ सेटिंग ना था एंड यहाँ पे बीजी क्वालिटी ने तो कहनी जी सारी अगर अच्छी आप हुई थी अगर कि पढ़ाई लिखाई करते हो तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का जो यानी कि उतने बजट में नहीं रहता, दिखाना होता है गेम प्ले से पीसी को फेंक दो। दिक्कत याद है आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने पे यहाँ पे आपको वीआईपी मांगता है, हम करेंगे देखो नॉर्मल हो गया है। तो हमारा एक करीब बढ़ते क्वालिटी देख सकते हो आप कितनी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे आ रही है। बट मैं सेटिंग में जाता हूँ उस क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव
हाँ। दूसरी बात यहाँ पे ऑडियो सिस्टम आया है तो ये फिर ना ऑडियो मिलेगी, लेकिन कौन सा मतलब कि थोड़ी माउस का आपका मोबाइल को टच करके करना होगा, क्योंकि आपको कीबोर्ड हाँ। नहीं चलता। या देखो खुले अगर हम चलते हैं, अगर कोई गेम, अगर मान लो गेम प्ले ही लगाते हैं वहाँ पे वही चीज़ शो पूरा एकदम तुरंत काम कर रहा है 0 ms पिंग के साथ, मतलब कि यहाँ से आपने किया कमांड, आपके पीसी पे इंस्टेंट कमांड वहाँ पे वही चीज़ शो कर रहा है, मानी कि बीच में कोई भी लेट आपका हो नहीं रहा है। तो इसे आपको क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप देखो यहाँ पे ऊपर में सेटिंग में जाना है, यहाँ पे टैप करने के साथ एंड यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। यहाँ पे स्ट्रेच वगैरह ये सब टिक नहीं करना है, जब ओपन करते हैं फुल स्क्रीन ये सब नहीं करना है हमें। स्ट्रेच करोगे, ये जो स्ट्रेच कर देंगे तो हमारा डिस्प्ले ये देखो इस प्रकार दिखेगा, लंबा लंबा दिखेगा, आपको देखने को अच्छा भी नहीं लगेगा। ऊपर नीचे ये काट दिया गया है, अगर अच्छा लगता है आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ जैसा सिंपल भी हो है गया, चलिए। डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ पे सबसे नीचे वाले हाईएस्ट, क्योंकि वो हमने वायर के थ्रू भेज रहे हैं तो हमें जितना ज़्यादा क्वालिटी अच्छी मिलेगी उतना हमें बढ़िया लगेगा देखने को। तो सबसे 2K में हम भेजेंगे, उसके हाई स्पीड मोड सबसे नीचे वाले चूज़ करेंगे, कंबाइन मोड में QGDPI को रखेंगे। उसके बाद सबसे नीचे जो FPS है वो हम 60 पे रखेंगे एंड लाइट और डार्क ये तो आपके थीम है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये हो गई हमारे जो है वो अपने PC के सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन के, हमें अच्छी क्वालिटी ऐसे मतलब कि एकदम बिना लेट किए मतलब फास्ट होने तक तो हम पूरे मस्त मतलब कि एकदम इसकी क्वालिटी एंड यहाँ पे जैसे आपको फ़ोन की क्वालिटी उतनी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन साउंड का पंगा थोड़ा रहता है। अब चलिए हम सेटिंग की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन में सेटिंग के में क्या क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर सेटिंग चेक करते हैं, हम सेटिंग में जाएँ, ऊपर आइकॉन बना हुआ यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे दिख जाएगा आइकॉन। तो यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको सेटिंग चेंज कर, जैसे कि आपको मिररिंग करने का अल्ट्रा पे मैंने कर रखा है, ठीक है। नीचे आएंगे तो हम 10 से 80 पिक्सल ऊपर देखने मिले हाईएस्ट जो हमारा यहाँ पे निकलने का रहेगा आउटपुट। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट, बाकी आप सेटिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। कास्ट मिरर ऑडियो, तो ये ऑडियो को मैं जैसे ऑन करूँगा, हेलो हेलो, तो हमारा ऑडियो जो है सिर्फ इसमें से जो माइक हमारा है, जैसे कि हम किसी बात करते हैं वही ऑडियो आपके पीछे तक फेंक रहा है, ठीक है। आपके इंटरनल गेम प्ले का ऑडियो नहीं फेंक पा रहा, जिसको आप ऑक्स लेवल वगैरह लगा के और उधर बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे आप देख सकते हो। उसका मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, वो मैं बहुत जल्द नया पार्ट लाऊँ इसको फिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेल टू मेल स्प्लिटर मिलता है, मेल टू फीमेल स्प्लिटर को थोड़ा दिक्कत हो जाता है आपको कास्ट करने में, फिर तो ज़्यादा स्प्लिटर वगैरह लगाते हो तो हाथ पे बहुत ज़्यादा वायर आती है, तो हमें गेम प्ले का भी उस पर इफेक्ट Hey, I'm Okay. Pazooks, and in this video, we're going to be करो। talking about the one true free knife that you can get in CSGO. The knife that you can buy with just in-game drops. Sponsored by Skinport, the easy-to-use skins marketplace where you can sell your skins for real cash. More about them later. So, this video is really a bit of an experiment to see whether something is possible. We all know you get drops when playing CSGO, but we don't pay much attention to them because normally they're only worth a couple of cents, so I mean, who cares? But what if you could convert those drops into something valuable, like, I don't know, a knife? Okay, and sure, maybe a butterfly knife is a bit unrealistic, but any knife at all. Is it possible? Well, that's what we're going to find out. So, let's have a look at what drops you can get in the first place. Each week, you can get one level up drop, which is either a skin drawn from one of 8 collections or a graffiti. In addition to that, you can get dropped 1 to 2 cases per week as well, and that's in addition to a couple of wild cards that we'll talk more about later. Now, you'd assume
the big money is in the skins. So 52 drops, which are either graffitis or skins, let's assume they're split 50-50, I don't see why they wouldn't be. How much can you make per year of these things? Well, there are some very valuable skins in these collections. So, for example, in the Inferno collection, there is a factory new Integrally, a skin worth about $200. That'd land you a pretty nice knife, wouldn't it? But when you crunch the numbers, they're god awful. So you have a roughly 1 in 2.1 million chance of getting one of these things when you get a drop. Realistically, that's just not happening, and realistically, you're looking at 1 mil-spec skin per year tops, and on average those will sell for $1. Now, you'll probably also get 5 industrial grade skins, you'll get about 10 cents each on those, and 20 consumer grade skins, which will sell for more like 2 cents after Steam tax. And those 26 graffitis, yeah, they're only worth about 1 cent after Steam tax, but hey, that's $2.16 all up. That's pretty good, right? I mean, the cheapest knives are only $70, so all we need to do is find another $67.84. Sounds pretty easy, right? But the good news is, the big money isn't in these shit tier skins and graffitis, it's actually in the cases. Now, in the past, case drops weren't really worth anything, they were worth maybe a cent. In fact, you may as well have just outright deleted them rather than selling them. But then, a certain East Asian nation started getting really big into CSGO, and they decided they really liked these things, and all of a sudden, those prices started going up. 女士们、先生们，大家好。 Thank you, Mr. Chairman. Now, weirdly enough, we don't really know for sure how many cases you can get dropped per week. Sure, 20 million people may play this game each month, but basically none of them actually keep track of this stuff, so we don't really know. In late 2019, Valve did increase the weekly cases you could get dropped from 1 to 2, but it may have been reduced back to 1 in the meantime. I couldn't conclusively figure it out either way, but we will just assume we're limited to 1 case drop per week. That's all we need. Now, there's also different drops for Prime and non-Prime players. Only Prime players can get new cases. We'll assume we're using a Prime account because we want to be getting that new case. That is where we're going to be making our cash. Your average drop is worth like 3 cents, not heaps, but if you get a brand new case right after it comes out, well, that can be $10 right there. And for a couple of months afterwards, that case can be worth anything from $3 to 50 cents. So, generally speaking, Valve releases 3 cases per year, and if we can get just one of them right after it comes out, which is a reasonable bet given there's only 5 drops in the pool, that will net us $10 right there. And let's say we also get 6 new cases after they've been out for a couple of weeks, which would net us about another $6. And then we'll assume that the remaining cases we get are all worth 3 cents. Well, all up, we've ended up with $17.35, which means, all in all, we have $19.51. Again, not quite the $70 we need to get that knife, but believe it or not, that's already enough money. In fact, we've basically got all we need at this point. Sure, there's ways we can take it further, but from $19.50, we can get a knife. Easy. So, how do we do that? Well, it's simple. When the major rolls around, we invest all the money in autograph capsules when they go on sale. We've got enough for 78 of these capsules, and we're going to buy them and hold on to them. And I know a lot of people who invest in capsules watch my content, but you're probably still going to be surprised at just how much money you're going to end up with. So, if we'd invested in Berlin 2019 autograph capsules during the major sticker sale, so about a year ago, and sold them today, we'd find ourselves with $80. We'd have made a profit of $60.50, enough to get a gut knife urban mask, a Navajo knife Damascus steel, or a used set of butt plugs. However, if we sold our capsules at their peak prices in July, with the benefit of perfect hindsight, admittedly, we'd have more like $160, maybe even a bit more, enough to buy a Bowie knife case hardened, or a Falchion knife Crimson Web, or a flip knife Autotronic. All pretty nice knives and nothing to be scoffed at, all starting from absolutely nothing just 2 years ago. But we've got options to try and push things even further. So for one, you could have a Smurf account. A lot of people do. In fact, I've got a
couple of spare accounts lying around, both with Prime. And if you play on your Smurf regularly, you can potentially double the number of drops you get. Now, it'd probably be dishonest to say that means double the money. I think we've been pretty optimistic with the numbers so far, but having a Smurf that also has Prime status, definitely makes it a lot easier to get yourself a knife. And then there's the wild card. So there are these things called rare drops, where very occasionally you can get dropped a case that's been discontinued, like this guy here who got a CSGO weapon case, a case that was discontinued in early 2014. Now, not all of these cases are worth very much, but some of them are, like this Bravo case, which is worth $27. Now, your odds of getting one of those is pretty low. We don't know the exact number, but if it happens, well, that's going to help a lot. But there is an even bigger wildcard than that. Operations. You see, Operation Shadow Web brought in a system where you could complete challenges to get drops, and towards the end of the operation, it became profitable to start completing the challenges on the battle pass to farm drops. Now, the amount of money you could get varied wildly depending on what your luck was, but the 8 cases were a guaranteed $6, the agents could be anything from $4 to $8, the stickers would generally get you $1 to $2, and the skins could get you anything from $1 to $2,000. Although in fairness, around $5 is a reasonable average price. So as long as you had the $15 to buy the battle pass to start things off, you could more or less endlessly make money by farming drops and switching from account to account. And provided you're someone who's got the time to do it, well, this provides a pretty easy way to add more money to the pile, and as a bonus you can play Counter-Strike with your friends at the same time. But it does all depend on Valve actually bringing out another operation, and who knows when on earth that is going to happen. Knowing them, it'll probably be 2025 or something, but if it turns out that the next operation is only 2 months away instead, well, that could be your opportunity, and with a little bit of luck, maybe you could end up being able to afford that butterfly knife after all. Who knows? Anyway, before I finish this video, I do want to acknowledge that yes, there are a lot of assumptions in here, the rough estimates, approximations. I'm looking at stuff with the benefit of hindsight because I can't know what's going to happen in the future, but hopefully I've shown that if you are persistent and patient enough, you can afford a knife from your in-game drops. And if 2 years seems like a long time, well, let's be real. A lot of you were playing CSGO 2 years ago, weren't you? In fact, you've probably been playing a lot longer than that. And anyway,